Namaskar and welcome to this episode of InConversation. Today we have with us Mr. Nirav Shah, who is Group Head HDFC Bank and looks after emerging corporate group, rural banking group, transportation. Along with him, we have Mr. Rajinder Babbar, who is a veteran in the field of rural banking group. He heads that function in the bank. And today with them we'll be discussing whole range of activities that the bank has taken over the years to help the farmers and people involved in allied activities. And we'll also discuss with them the way forward and how the bank has been helping people and will continue to help in this time of a pandemic which has encompassed the whole world and people are struggling to make their ends meet. Can you just give us some brief idea about how important agriculture is for the country at the moment when we are passing through this very critical phase of corona and we are almost to enter unlock 2? Thank you, Sanjay, for having us over. Let's try and address this question in two ways. Let's look at the demographic part of India and look at the economy. As far as demographic cut is concerned, the total population of India is 1.3 billion. Out of this, 66.4% of the population stays in rural area. 59% of the total population is directly or indirectly dependent on agriculture for sustenance. So given a very large percentage of population dependent on agriculture, it becomes critical. Now, when we look at the economy, India is the second largest cultivator of agricultural produce in the world. India accounts for 7.39% of the total agricultural produce. Indian food and grocery market is the sixth largest market in the world. India is the largest producer of fruit, milk, pulses, spice and jute. Agriculture contributes somewhere around 17 to 18% of GDP of the country. When we compare it to the rest of the world, the contribution is somewhere in the region of 6 to 6.5%. This makes agriculture not only important for India, but Indian agriculture is extremely important to the rest of the world as we are exporting a lot of agri-produce. So, Babbarji, as far as I know, you have been handling rural business for quite a long time in the bank. आप हमें बताएंगे क्या कि इस पूरे बिजनेस के पीछे विजन क्या है, हम लोग कैसे काम करते रहे हैं और आगे फार्मर्स के लिए किस तरीके का सेगमेंट्स है जिससे हम उनको हेल्प कर रहे हैं इन दिस एंटायर टाइम ऑफ बिफोर कोरोना स्टार्टेड एंड हाउ यू हैव हेल्प देम ड्यूरिंग कोरोना? संजय जी, इस जो हमारे एमडी साहब हैं, उनका जो विजन है, बेसिकली जो विजन स्टार्ट हुआ कि जब हमने 1995 में बैंक को ओपन किया है, 2006 तक हमने काफी ब्रांचेस खोली, तो एमडी साहब को उस समय का विजन था कि हमें रूरल इंडिया को भी सर्व करना चाहिए। तो ये ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया 2005-06 में एंड 2009-10 में हमने इसको टेक ऑफ किया बेसिकली, और विजन यही था कि हम इसमें रूरल इंडिया में मैक्सिमम फार्मर, मैक्सिमम लोअर सेगमेंट, मैक्सिमम डेयरी फार्मर, इन सभी को हम सर्व कर सकें। तो उसके बेसिस पे हमने स्लोली काम किया एंड हम उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करते गए एंड टाइम के हिसाब से हमने देखा कि जो फार्मर का नीड है, बेसिकली वो नीड सिर्फ क्रॉप लोन नीड नहीं होता है। फार्मर का जो नीड होता है वो एजुकेशन लोन भी होता है, फार्मर का नीड होता है हाउस भी होता है, फार्मर का नीड होता है ऑटो लोन, टू व्हीलर भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो उसके हिसाब से हम अपने ग्रुप को जो चेंज करते गए एंड प्राउडली अंडर द विजन ऑफ द एमडी सर, फाइनली हमने आज तक के करीब फार्मर को जो लोन दे दिया है। उसके बाद हमने काफी डेयरी फार्मर को लोन दिया हुआ है, स्मॉलर सेगमेंट को लोन दिया हुआ है। तो रूरल एक इकोसिस्टम को हम अपने हिसाब से देखते हैं कि कैसे हम कंट्री की, बिकॉज व्हेन दी इंडिया मेन जो ग्रोथ है वो रूरल में है, हम कैसे रूरल में अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। तो अगर आप देखोगे कि हमारी काफी ब्रांचेस, मैक्सिमम ब्रांचेस भी रूरल इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया में है। सेकंड जो सिचुएशन आता है कि जब हम इस जर्नी को पास कर रहे थे, तो पास करते हुए अगर आपने देखा होगा कि हमने लास्ट ईयर हर गांव हमारा एक्टिविटी शुरू किया था, जिसमें हमने बेसिक फार्मर लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश की और हमने मोर देन 5 लाख फार्मर को कनेक्ट किया
25,000 से करीब विलेज के में हमने जाके डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटी की एंड उसका रिजल्ट ये आया कि काफी फार्मर हमारे से कनेक्ट हुए। इसके अलावा बैंक ने काफी ऐसी एक्टिविटी की रूरल इंडिया में कि जिससे कि हमें फार्मर भी हमारे क्लोज आए, रूरल इंडिया जो कस्टमर है वो हमारे क्लोज और हम उनके क्लोज गए। उसको हम लर्निंग करते गए एंड इफ यू रिमेम्बर कि पीछे हमने जनवरी फरवरी में एक टोल फ्री नंबर भी जब हमने हर गांव हमारा में एक्टिविटी किया तो टोल फ्री नंबर भी था, वो भी लॉन्च किया बिकॉज फार्मर को जो मेन प्रॉब्लम आता था कि वो बैंक से कैसे कनेक्ट करे एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम आता था, कोई ऐप नहीं था, तो सिंपली ही कैन गिव ए मिस कॉल टू अस, तो हमने टोल फ्री नंबर शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन जो आपने बात किया कोविड का, तो कोविड इज अ डिफरेंट सिचुएशन राइट। कोविड में फार्मर के लिए मेन इफ यू नो कि ये जो हमारा क्रूशियल पीरियड होता है मार्च और अप्रैल का, इट इज क्वाइट ए क्रूशियल पीरियड क्योंकि दिस इज द मेन पीरियड जहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है मेन क्रॉप का। तो इस समय जो फार्मर के पास कैश फ्लो होता है वो उसको पूरे साल हेल्प करता है। अब ऑल ऑफ ए सडन मार्च में जब कोविड आया तो उसमें सबसे पहले जरूरी था फार्मर के लिए कि उसको हार्वेस्टिंग होना चाहिए, दूसरा उसका रिक्वायरमेंट था कि उसका क्रॉप मार्केट में सेल होना चाहिए, तीसरा जो उसका रिक्वायरमेंट है कि वो सोइंग में मतलब उसकी हेल्प होनी चाहिए, वो सो कर सके वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए। बट वो सब कुछ लॉकडाउन था। गवर्नमेंट ने फार्मर का काफी हेल्प किया, तो गवर्नमेंट केम विद डिफरेंट स्कीम की पीएम किसान योजना में उन्होंने फार्मर को एडवांस पेमेंट किया। तो रूरल इंडिया में मनरेगा के अंडर और काफी स्कीम्स के अंडर लोगों को पैसा पहुंचाने की कोशिश की। हमने भी एज ए बैंक क्या किया कि हमने सोचा कि हम फार्मर का कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली फर्स्ट हमने ट्राई किया कि क्या हम सारे फार्मर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सारे स्टाफ को बोला, डायरेक्शन दिया कि आप सभी फार्मर से कनेक्ट करो, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझो कि हार्वेस्ट पीरियड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। तो कैन वी टेक अप विद द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्या हम आरटीआई से डील कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट स्टेप्स किए थे और अपने फार्मर को ऐसा रखा कि फाइनली कि हमने चेक किया कि उसका हार्वेस्टिंग हो रहा है तो उसका मंडी में भी अगर उसका कुछ हम हेल्प कर सकते हैं एज ए बैंक तो हमें हेल्प करना चाहिए। बट उसमें इफ यू रिमेम्बर कि अप्रैल मई में जब ये ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ओपन हुआ फार्मर्स के लिए, पर कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम था। और इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट डिड अ ग्रेट जॉब कि उन्होंने बोला कि फार्मर का हमें हेल्प करना चाहिए और इनको इनहेंसमेंट देना चाहिए। तो हमने फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की हमने हर एक फार्मर को इनहेंसमेंट दिया एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शन, सो दैट कि फार्मर को ऐसा ना लगे कि मेरे पास कैश फ्लो नहीं है तो मैं सोइंग कैसे करूंगा। फिर हमने जब उसका हमने देखा कि फाइनली जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया कि उसको मोरेटोरियम देना है, तो हमने मोरेटोरियम दिया फार्मर को। और ये सब कुछ हमने विद ए टाइम डिजिटल करने की कोशिश की। नीरव जी, एक काफी इंटरेस्टिंग बात आ रहा है कि आपने भी कहा, बब्बर जी ने भी कहा कि देयर इज अ वाइड अपॉर्चुनिटी। तो अभी एज अ बैंक ओवरऑल बैंकिंग का पेनिट्रेशन कैसा है इन रूरल एरियाज, हमारे बैंक का कैसा है और फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि आपने भी कहा कि हमारा मेजर पॉपुलेशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आप एज अ बैंक इसको कैसे देख रहे हैं नियर फ्यूचर में कि ये पैंडेमिक के साथ अपॉर्चुनिटी है और लोगों को आप कैसे हेल्प करेंगे सुदूर गांव में अपने एक्टिविटीज के तहत? If we look at it, there are approximately 6.5 lakh villages in India. And as I had mentioned earlier, 66% of the population stays in rural India. When we look at the banking infrastructure, today we have 59% of the branches in the rural market. So while banking infrastructure has coped with the percentage of population, but if we look at the share of the deposit and advances, only 27% of the total deposits of the banking system comes from rural market. And when we look at advances, the number drops down to as low as 22%. Now, whether it is the nationalized banks contributing to almost 64% of the total lending book in the rural market, private sector banks contributing around 23%, and regional rural bank contributing to 12%. Except for regional rural bank, who have a 92% of their total credit book in the rural market, rest of them have a very small percentage of their total advances into the rural market. Now, if we look at the backdrop in the rural market at this particular point in time, NREGA has reduced the unemployment rate.
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has picked up pace, and the road construction in rural areas is happening at a pace much higher than ever before. The government has announced its intent for 100% electrification of a lot of villages. Mobile penetration in villages is increasing, and so is the use. Panchayats are getting Wi-Fi. Literacy rate in the country, and more particularly in villages, is going up. Government expenditure in the rural market is increasing, whether it is in terms of providing affordable house, whether it is the tap water, whether it is the healthcare coverage. Government is doing a lot there. Now, when you look at it with per capita consumption in India, which is anyways lower than the per capita consumption across the world, clubbed with rural consumption is even lower, gives a great opportunity to grow. Now, while it is very difficult to assess the market size given the low penetration, but if we look at some of the indicators, cash flow in the rural market is growing very fast. 2, credit behavior is better than what was expected. 3, origination and service cost of a retail customer is substantially lower. And with banking network, opportunities and people moving into the formal banking network, opportunities will only grow. HDFC Bank recognizes this and has a very deep penetration in the rural market. We have been customer centric in terms of our approach. When one of our relationship manager touches the customer, he markets for liabilities and all asset requirements of the customers. We in fact also extend advisory facilities to the client. We therefore believe that market is at a very nascent stage and we should see growth and a much higher capita consumption coming from the rural market. What is your assessment on the overall impact of pandemic on the economy and on the lives of people? So India's epidemic curve is rising. That is, number of daily cases are going up, but infection rate is declining. Today, recovery rate has improved and exceeded the active cases. Some of the sectors are severely impacted, something that was dealing in non-essential goods, travel, entertainment. The scary part is that the top 10 states where COVID impact is very high contributes to 68.4% of GDP of India. Now, this is an area of concern. If we look at GDP, there are 4 pillars to GDP: consumer expenditure, investment expenditure, government expenditure, and exports. Now, weak domestic consumption and impacted consumer sentiments has affected the largest pillar, which is the consumer expenditure. With consumer expenditures being low, it has an after effect on the investment, which is also not likely to be high during these times. Government expenditure, and government has done a fabulous job, but they need to do a balancing act between supporting the needies and at the same time create infrastructure. Given that supporting the people has taken precedence, some of the infrastructure building measures, the nation building measures will have to be pushed a little forward. COVID has not only affected India but has affected the large part of the world, because of which exports are also impacted. So the expectations are that GDP for financial year 21 would be somewhere minus 5% for the year. Q1 was very badly impacted. Q2 will still be negative, but Q3 and Q4 we should see a positive territory on GDP growth. If we look at some of the early signals that are coming, PMI manufacturing index has already gone up to 30.8. Electricity, which had degrown by 22.5% in April, the degrowth has reduced to 14.9% in May. E-way bills have already reached a level of 25.5 million vis-a-vis a pre-COVID level of 57 million. Commercial vehicle usage has gone up to 60%. Now, with all of it, base effect and the growth numbers that are visible, we should see a 8.5-9% growth in GDP for financial year 22. The way we work, the way we live will change. And hopefully COVID will be behind us and we should be seeing life as usual very soon. What is the impact of COVID on the farming community, on rural lending? How is the present demand that you are seeing from the agri sector? Basically, there are, as I already explained, there is an impact on the farmer community because it was a crucial period for us, for the farmer.
It was a harvesting period and coming with the sowing period. Now, if the farmer is not able to harvest, so his full year is gone. And the second is for sowing, he needs some money for sowing the crop. Otherwise, then he cannot get his next crop also. These were the two reasons. The another was the transportation problem for a horticulture crop, especially the mango and the others, because there was no transportation. And all these crops are the perishable crops, so were getting perished. So overall, although it was a bumper year crop, but finally the overall cash flow the customer was he was supposed to get 100 rupees because of the different reasons. He was able to get 80 rupees or 90 rupees, right? Because of certain reason. But the government has helped him a lot. The government has given us a direction. The bank, you have to give him the moratorium. The government has given a direction. Yes, you have to give him some help in the form of money, in the form of 10% limit for a KGC limit, so that he can do his sowing. On the bank side, we did our best. We connected with almost all the 5 lakh customers and 4 or 5 time calls. We helped the customer, understood the customer, and we tried to meet their requirement. The first requirement was the moratorium, so we have given them the moratorium period for their loan amount, so they are relieved. The second was basically support in terms of the money, so we have given them a 10% enhancement limit. We connected them, and all this has been done through a digital media. And then when we learned from them that they need a health insurance, we immediately within 1 or 2 months developed an app where the customer can apply for insurance on the mobile app. So all this activity we as a banks did, and उसके बाद हमने what we did कि we connected with the government department कि farmer का कहाँ पे we can उसका help कर सकते हैं. तो ये सारा एक्टिविटी हमने फार्मर के साथ किया. और अभी अगर आप you can understand in the rural market, especially in the dairy market, कि वहाँ पे हमने इंश्योर किया कि हमारे जितने भी BCs थे, जितने भी हमारे मिल्क टू मनी ATM हैं, they should be very active, so that 100% active, so that the farmer can go and withdraw the cash from these BCs, and because they need in the rural market, right? So accordingly, we face a lot of problem during this because of the transportation and other things. But हमने कोशिश किया कि हमारे जितने भी BCs हैं, हमारे मिल्क टू मनी है, वो सारे एक्टिव रहने चाहिए. तो उसमें हमने एक अभियान चलाया, साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसमें हमने कोशिश किया कि हम डिफरेंट BCs को कनेक्ट करें आपस में, सो दैट कि हमारा मशीन एक्टिव रहे. हमने इंश्योर किया कि कस्टमर को जो भी अगर उसको सपोज की सेविंग अकाउंट का रिक्वायरमेंट था एंड ही वाज नॉट हैविंग हिज सेविंग अकाउंट, तो हमने एज ए बैंक इंस्टा अकाउंट ओपनिंग किया, जिसमें हम कस्टमर में ऑनलाइन डिजिटली वी आर एबल टू ओपन हिज अकाउंट. तो हमने डिफरेंट अपनी तरफ से एज ए बैंक साइड से कस्टमर को जो भी हम सपोर्ट कर सकते थे, उसके लिए हमने पूरा कोशिश किया. How did the agri team work on the ground during lockdown to help our farmer community, bearing all the odds? तो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड हमारी जो टीम है बेसिकली, वो उन्होंने इंश्योर किया कि वो कभी 6 बजे सुबह 7 बजे उठ के भी फील्ड में जाते थे, कस्टमर को मिलते थे, और पता चला कि लॉकडाउन हो गया है तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा, और फिर शाम को 5 बजे से पहले निकलना होता था. तो हमारी टीम ने पूरा कोशिश किया, पूरा हेल्प किया कि ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड हम खुद भी सेव रहें और साइमल्टेनियसली जो है कस्टमर को भी हम हेल्प कर सकें. फार्मर कम्युनिटी के से बिकॉज वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी. मतलब लोगों ने ये बोला कि यू एज ए बैंक आप हमें इस जो डिफिकल्ट मोमेंट में हमें मोटिवेट कर रहे हो, हमें डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट उनके साथ जो कनेक्ट था इट वाज रिलेटेड द कोविड की. हमने उसको गाइड किया कि कोविड में कैसे बचना है. फिर हमने उसको पूछा कि हार्वेस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, फिर हमने पूछा कि सोइंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, फिर हमने पूछा कि आपको कोई और सपोर्ट चाहिए. तो अकॉर्डिंगली हम ऐप को डेवलप करते गए, उनको सपोर्ट करते गए, एंड द लेटेस्ट ऐप इज बेसिकली इट इज अ फीडबैक ऑफ द फार्मर कम्युनिटी ओनली. So I'm really thankful to the farmer कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, और I'm really thankful to the total team member, each and every team member कि during this situation उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किया कि हम एक फार्मर तक रीच कर पाए. रोहित, बेसिकली प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, प्री कोविड में क्या होता था कि हमारा जितना भी कस्टमर के साथ कनेक्ट था इट वाज थ्रू मतलब वी आर मीटिंग द कस्टमर बिकॉज कस्टमर नीड ए सपोर्ट.
पर पोस्ट कोविड से प्री कोविड के बाद हमें ये समझ में आया कि अभी जो आने वाला पीरियड है उसमें कस्टमर यू हैव टू मेंटेन ए सोशल डिस्टेंसिंग, बट फाइनली आपको कस्टमर का हेल्प भी करना पड़ेगा। एंड उसी की वजह से हमने क्या किया कि इमीडिएटली अंडरस्टैंड किया, क्योंकि फार्मर का जो रिक्वायरमेंट होता है, मेन रिक्वायरमेंट होता है उसका लोन्स का रिक्वायरमेंट होता है, मेन रिक्वायरमेंट होता है उसका कैश विड्रॉ का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि हम जो ऐप लेके आए हैं, अगर आपको याद होगा, तो वो उसी को सोचते हुए लेके आए हैं कि कस्टमर अभी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने लोन को अप्लाई कर सकेगा। उस ऐप में अगर आप देखोगे देयर इज अ फैसिलिटी वेयर वो कस्टमर अपना लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकता है, और कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है कि अगर उसको किसी स्कीम के बारे में जानना है, अगर उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी के बारे में जानना है, अगर उसको सॉइल टेस्टिंग करना है, अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन लेना है, तो वो हमने वो ऐप डेवलप किया है सो दैट कि अभी डिजिटली हम कस्टमर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और soon you will in the rural India you will see कि earlier the rural India was moving to a digital world on a slower pace. Now it will be a faster pace because जब फिजिकली कनेक्ट कम हो जाएगा तो डिजिटल जो इंडिया है, रूरल इंडिया, वो फास्टर फेस में मूव करेगा। तो सोन यू विल सी कि जितना भी, बिकॉज हमारे जो लोन में रिक्वायरमेंट होता है कि जो तहसील्स होती हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, ये सारे डिजिटली कनेक्ट होने चाहिए, और हम एज ए बैंक हम उसको जो मोर्गेज है उसको भी डिजिटली कर पाए। तो एंड टू एंड अगर हम लोन कस्टमर को डिजिटल दे पाएंगे तो जो वो पेस था कि वो टाइम लगना था, अभी मुझे लगता है कि वो काफी फास्टर हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा विद इन 1 ईयर कि जहाँ पे हम कस्टमर को अगर वो डिजिटली अप्लाई करेगा, ऑल्दो वी हैव गिवन हिम असिस्टेंट ऐप जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप मैनेजर है वो उसको हेल्प भी कर सकता है। तो विद इन 1 ईयर यू विल सी कि जो कस्टमर है लोन भी जो है वो डिजिटली अप्लाई कर सकेगा, एंड विद इन 1 or 2 days ही विल गेट ए क्रेडिट ऑफ दैट लोन। सेकेंडली, कस्टमर की जो आदत पड़ जाएगी, बिकॉज डिजिटली जैसे एप्स को यूज करने की कि उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसको अपना कोई क्रॉप सेल करना है, तो वो सारा वो डिजिटली ऑनलाइन मीडिया पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड उससे क्या होगा कि काफी सभी का मतलब जो लगता है, जो हमें भी लगता है कि जब भी हम डिजिटल मोड में शिफ्ट हुए तो हमारा टाइम बचेगा, तो सेम फार्मर एंड पे भी यही होने वाला है कि रूरल इंडिया में, बिकॉज इफ यू सी द रूरल इंडिया इज लेस इम्पैक्टेड विद द कोविड एज कंपेयर्ड टू द अर्बन इंडिया, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन इन द रूरल इंडिया। तो जो ग्रोथ रूरल इंडिया का फ्यूचर में होने वाला है, बिकॉज वो फास्टर होने वाला है। काफी बातें जो सामने आ रही हैं, इस पूरे समय में गवर्नमेंट के तरफ से काफी रिफॉर्म्स किए गए, काफी स्टेप्स लिए गए। तो कैन यू एक्सप्लेन अस कि हाउ दीज रिफॉर्म्स विल बेनिफिट द फार्मर्स, और बैंक्स इसको लेके क्या कर रही हैं सो दैट द एंटायर रूरल इकोसिस्टम इज preserved, or everyone gets the maximum benefit of the reforms and the steps taken by the bank? For me, I would break the government initiatives into 3 big buckets. First is in terms of the total outlay of more than 1.63 lakh crores for the rural economy. Second is amending the Essential Commodities Act, wherein whether it is cereals, edible oils, oil seeds, onions have been taken out of the purview of essential commodities. This is removing the stock control. The third initiative has been that farmers can now choose the market where they want to sell their produce. They have removed the interstate trade barriers for agriculture. Now, when you look at these initiatives, coupled with the fact that Farmgate Infrastructure Fund of 1 lakh crore has been announced, proposed investment in agri-value chain will happen. This should help farmers realize anywhere between 25 to 30% higher realization. There have been certain other initiatives in terms of the pisciculture, land reforms, labor reforms, which are also welcome. Now, for a bank, when infrastructure comes in, it is only going to give incremental comfort for the bank to lend to these sectors. Now, if we look at the initiatives, moratorium or Essential Commodities Act amendments are primarily COVID related, but some of the other things in terms of the outlay or the agri value chain are structural reforms which are going, the benefits of which will accrue over a foreseeable future. Do believe that a good and quick execution can increase cash in the hands of the farmer and give boost to rural consumption. Now, incremental cash in the hands of the farmer only makes more and more farmers bankable, and the bank would extend support whatever is required to these set of farmers.
Can you elaborate on what kind of products we are offering to the farmers at the moment, and what are the new kind of offerings we are thinking based on our experience during the COVID, so that the farmer, who is the last person in the country, gets benefited of all these offerings from the bank? Uh, the rural India may basically, if you see, it is not only the one product you are eating, Sanjay. We have a different product. One is the perishable, but broadly, अगर आप rural को divide करते हो, तो one is the perishable crop. The second is the crops which can be stored. So every crop has a different scale of finance. मतलब किसी में आपको अगर एक महीने एक साल में क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो जो सोइंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है 20 से 25,000 होता है, तो दूसरी क्रॉप के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो 50,000 होता है, और तीसरी क्रॉप के लिए अगर हॉर्टिकल्चर हो तो वो और बढ़ जाता है. तो फिर अकॉर्डिंगली बनाना के लिए अगर आप देखोगे, आप फ्रूट्स के लिए देखोगे, मैंगो के लिए देखोगे, एंड देन द डिफरेंट जितनी भी क्रॉप्स है सभी के लिए देखोगे. तो एज ए बैंक इन द लास्ट 10 years हमने हर एक क्रॉप के लिए एक अलग प्रोडक्ट प्रोग्राम बनाया. हमने नॉर्मल क्रॉप के लिए एक प्रोडक्ट प्रोग्राम बनाया जो कि हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया कस्टमर के लिए. हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए प्रोडक्ट प्रोग्राम बनाया, एंड देन हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट वैरायटीज आता है. हमने हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया. उसके बाद अगर आप देखोगे कि देन एग्रीकल्चर में अलाइड एक्टिविटी भी आता है, पिसिकल्चर आता है, अलाइड एक्टिविटी में रबर आता है, अलाइड एक्टिविटी में बेसिकली पोल्ट्री आता है. तो इस सभी के लिए अगर आप बैंक साइड पे देखोगे तो हमारे आज की डेट में देयर आर मोर देन 100 मीन्स टू फंड टू दिस फार्मर्स. हमने फार्मर को अंडरस्टैंड किया और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने हर एक फार्मर को हेल्प की कोशिश की है. जैसे ग्रेप्स के लिए उसका अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो हर एक क्रॉप का अलग रिक्वायरमेंट होता है. और एज ए बैंक लास्ट 10 year में हमने अपने आप को काफी इन्वॉल्व किया है. ये सारे जो प्रोडक्ट पेपर हैं उसके बेसिस पे हम फार्मर का सपोर्ट करते हैं. अभी कोविड की वजह से नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टू अ मैनुअल वर्ल्ड टू अ डिजिटल वर्ल्ड एट अ फास्टर रेट. तो हमने पहले ही प्री एडवांसमेंट में अगर हमने देखा है तो ये सारा जो हमने इकोसिस्टम है उसको भी डिजिटली मूव करना शुरू कर दिया है. तो स्लोली वी विल गिव ऑप्शन टू अ फार्मर कि वो डिजिटली ऑनलाइन मीडिया पे जाके वो अप्लाई करेगा, और पॉसिबिलिटी होगा कि वो कहीं पे भी सपोज के पास लैंड इतना है और अगर वो कुछ बेसिक फील्ड डालेगा तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल फेच द फील्ड फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज, एंड साइमल्टेनियसली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोग्राम हम उसको फास्टर जो है डिलीवरी हम दे पाएंगे. तो ये जो सिचुएशन है कि जो मैनुअल से डिजिटल चेंज होगा, तो उसमें हम बैंक वी आर रेडी फॉर द सेम, एंड अकॉर्डिंगली हम काफी फास्टर इस पे काम करेंगे सो दैट वी कैन सर्व द नेशन एंड द फार्मर्स. Okay, I would just like to add to what Babbar said. In India, primarily you have two crops, Kharif and Rabi. Now, typically a farmer ends up getting cash flows 2 times in a year. But if you look at your expenses are going to be across the year. So one is in terms of managing the cash flow mismatch that is there. Second is in terms of if there are any natural calamities or events, how do you manage it? So what you need to do is ensure that you are not only giving for sowing, but you are also giving money for consumption. So the structure is important. Again, you need to bring in the flexibility in terms of repayment in line with the cash flows. So I would say anything, whether any perishable, non-perishable commodity, whatever you finance has to be kept, the cash flows have to be kept in mind when you are extending loans to the farmer. As a bank, we have been into the business for last so many years, and India is known as a country where floods are there, cyclones are there, a large number of natural calamities happen now and then. How as a bank we help all these farmers across the country to mitigate the problem and overcome all these disasters which they face very frequently in the country? Natural calamity is a part of our life now. I still remember कि 3 या 4 साल पहले in the MP, especially in the UP, जब natural calamity आया था और हमने first time we had seen that natural calamity.
एंड एज ए बैंक बेसिकली जब हमने देखा, बिकॉज फाइनली नेचुरल कैलेमिटी में क्या होता है कि द कस्टमर इज नॉट हैविंग द कैश फ्लोज, कस्टमर नीड ए मनी। तो आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि कस्टमर को अगर व्हेन यू असिस्टेंट द कस्टमर तो फाइनली वो फ्यूचर में भी रीपे कर पाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छी स्कीम, क्लियर कट सर्कुलर निकाला हुआ है नेचुरल कैलेमिटी को हैंडल करने का। तो जब 13 एंड 14 में हमारे पास नेचुरल कैलेमिटी फर्स्ट टाइम हमने देखा, तो हमें थोड़ा सा लगा था कि यार ये ऑल ऑफ ए सडन क्या आ गया है। बट विद इन फेसेस, बेसिकली विद इन ए टाइम 2 or 3 year and 4 year, नाउ वी आर लर्न हाउ टू हैंडल द नेचुरल कैलेमिटी, जिसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर को वी ऑलवेज गिव ए टाइमली सपोर्ट टू द कस्टमर, राइट। और कस्टमर का क्या होता है संजय जी, अगर आप देखोगे तो रूरल कस्टमर इनोसेंट होते हैं। रूरल कस्टमर ऐसा कस्टमर होता है कि वो ऐसा नहीं चाहता कि वो बैंक का पैसा नहीं देगा। तो उसको बैंक का पैसा देने में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आ जाता है और उसका कैश फ्लो रुक जाता है। अगर आपने देखा होगा तो नीरव ने जो बोला कि फाइनली कस्टमर के पास मेनली 2 क्रॉप होता है, रबी एंड खरीफ, एंड इसके अलावा जो ईयरली क्रॉप भी होता है फार्मर का। तो रबी एंड खरीफ जो क्रॉप होता है उसमें बेसिकली उसका कैश फ्लो आता है, और अगर नेचुरल कैलेमिटी इसी पीरियड में आ जाए तो उसका जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है और उसके पास कैश फ्लो नहीं होता, और इमीडिएटली उसको जो रिक्वायरमेंट होता है वो नेक्स्ट क्रॉप को सोइंग करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। तो एज ए बैंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर निकाला, पर हमें एज ए बैंक भी समझना है कि फार्मर इज ए इनोसेंट। जब भी उसके पास कैश फ्लो होगा वो बैंक का पैसा देने के लिए रेडी है। तो अभी पैसा नहीं आएगा पर नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में पैसा आएगा, और वो जो डिफरेंस होता है वो 6 month का डिफरेंस होता है और 1 year का डिफरेंस होता है। तो ऐसे बैंकिंग हम लर्न कर गए हैं, और हमें पता है कि इसकी वजह से हम अभी नेचुरल कैलेमिटी को हम बेटर हैंडल कर सकते हैं। और सी इन द लास्ट 3 to 4 year बेसिकली, तो द स्कीम ऑफ द फसल बीमा योजना इज अ वेरी गुड स्कीम। I still remember when the scheme was started, so we faced a lot of problem because the customers or the farmer was not ready to pay for the premium. और within 1 or 2 years जब उन्होंने देखा कि नहीं इसमें क्लेम भी आता है और क्लेम भी मिलता है, and a lot of farmers are getting the claims. So accordingly, basically अभी more and more farmers are coming कि हमें भी फसल बीमा योजना चाहिए। So my final saying is the farmer of the India are the excellent. They want to repay back to the bank. They have a certain challenges of the cash flow because of the different reasons. One may be the natural calamity. The other reason is the way the COVID-19 the first time came and perishable crops. So there are different type of challenges for the farmer community. उस farmer community को as a bank we are trying to address. जो भी हम बैंक की तरफ से हम जो कर सकते हैं हमने किया। Secondly, the government is helping the farmer a lot in the form of different announcement, help to the farmer. So I'm sure कि farmer community in the next coming years काफी ज्यादा flourish करेगी, and especially when I said कि हम खाना नहीं छोड़ सकते, so definitely rural market में digital form में हम काफी कुछ invention देखेंगे और rural India हमारा काफी flourish होगा। What are the challenges and opportunities in rural lending? So let's list out the challenges in rural lending. The biggest challenge is fragmented land holding. Today, more than 85% of land is held by small and marginal farmer. And with every passing generation, the fragmentation of land is only increasing. This would make farming commercially unviable. Second is we spoke about the cash flow issues, spoke about natural calamities. The other aspect is poor banking behavior, wherein people had taken money from local money lenders, people take money from adatyas, and they have to pay a very high price for borrowing from the unorganized sector. There are debt waiver announcements. While needy need to be supported, but there are a few opportunistic people who believe that by defaulting, they will also get covered under the debt waivers. Specific challenges for the bank is largely coming from the fact that this is a cash-dominated economy. It is difficult to assess at times when banking behavior is not available. The last thing is the scattered customer base, and it is very difficult to reach out. Now, in terms of the opportunities, we've spoken about the government focus on agriculture. Government came up with minimum support price that should make agriculture viable. There are crop insurance schemes for the crop failures.
The agri supply chain will make it more viable. People are coming into the regular banking channel, which should also end up giving access to formal source of borrowing. India's per capita consumption is low, and with high cash flow into the rural markets, you should see consumption going up. In fact, the aspirations of the rural market have changed. With the availability of products and brands, they want to spend money. Mobile and digital initiatives have acted only as a catalyst to this whole process. If we look at Kharif sowing, as of 6th June data, we were almost 5% below last year's sowing levels. But as per the latest data of 19 June, we are more than 39% higher in sowing than last year. So in balance, I would say the opportunity outstrips the challenges. थैंक यू वेरी मच नीरव. आप आए, राजिंदर जी हमारे साथ हैं, एंड यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फार्मर्स एंड द एफर्ट्स टेकन बाय द बैंक and how we have helped them during this time of stress of COVID, and hope that in coming days, because of the efforts of the bank, the people living in remotest part of the country engaged in farming activity will benefit from all our efforts. Thank you very much.